So we finished with the algorithm. We discussed how we will work our management. Now, last thing, which is important for us, is the different type of ocular surgeries. Okay? What are the surgeries which can be performed? I'll be discussing surgeries for both esotropia and exotropia. ठीक है? Because I believe, I think कि अगर इसके बाद आप exotropia पढ़ लें, तो you won't have any trouble मतलब understanding exotropia on your own. स्टिल अगर आपको लगता है कि वी शुड डू एक्सोट्रोपिया, तो कल हम एक्सोट्रोपिया कर लेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद 4 इयर्स ऑन नेक्स्ट डे. आई बिलीव के बेसिक प्रिंसिपल्स भी वही है मैनेजमेंट के, ये फ्लो चार्ट भी मॉडलेस वही है, एक तो चीजें माइनर सी फर्क है. So I think this should suffice. So next question is, what are the type of surgeries which we can do? And these are important. These are more important than the algorithm which we discussed. You have to know the types of surgeries and how they are indicated, whether they are indicated. So what are the types of surgeries for squint or for this patient? So this patient मैं पूछ लेता हूँ, दो specific types होंगी. We have to know. So, does anyone know what are the different surgeries which we perform and what is the concept behind these surgeries which we perform? एक वो थी जिसमें इंसर्शन को हम हटाकर कहीं और लगा देते हैं या फिर लूज कर देते हैं या टाइट कर देते हैं Right, कर मसल देते को. हैं, right? Well, cool. That's good. That's good. That's a yeah. In one surgery, we loosen up or tighten up the muscle. Sorry, in one surgery, we loosen up the muscle. In the second surgery, we tighten up the muscle. So this is a poorly drawn eye. Yes, recession and resection. So let me try to illustrate this concept. So this is a poorly drawn eye. This would be the equator, where the muscles are usually inserted. आपको पता है sclera पे insert होते हैं, right? So this is a muscle which I'm trying to insert at the sclera. Okay? This is one muscle, this is the other muscle. If I were to have looking, अगर मैं ऊपर से right eye को देख रहा हूँ, तो then this would be the right lateral rectus. Right eye का ना lateral rectus होगा, LR होगा, and this would be the medial rectus. If this is the right eye, it's pretty straightforward. If we want to move the eye towards the left, what should we do? This is the left, this is the right. If you want to move the eye towards left, how would you want to manipulate these muscles? मीडियल रेक्टस को हटाकर उसकी इंसर्शन को आगे लगा देंगे. So what you're saying is that we want to improve the grip of this muscle. We want to increase the force on this side and we want to decrease the force on this side. Okay? So how can we move or decrease the force? One of the ways which we can decrease force is recession. ठीक है, रिसेशन का क्या मतलब है कि आप इस मसल को जो बिल्कुल टाइट लगा हुआ है, ऑरिजिन इसका पीछे है, इंसर्शन इसका है, व्हाट यू डू इज यू मूव द इंसर्शन एंड यू प्लेस द इंसर्शन अ लिटिल बैकवर्ड्स. इंसर्शन बैक करने से क्या होगा कि मसल जो पहले टेंस था अब रिलैक्स हो जाएगा. रिलैक्स हो जाएगा तो उससे क्या होगा, it will allow for easier manipulation and easier movement of the eyeball. Force basically इस तरफ कम हो जाएगी. This is called a recession. ठीक है, recession means that you're basically weakening the muscle. On the same side, ठीक है, recession alone हमने कर ली तो इसका action बढ़ गया, but we also want to increase the force on this side. Let's say that this muscle is very tight. अभी भी ना tight है, it's under immense tension. ठीक है, and it is attached tightly. If you want to increase the force or the tension in this muscle furthermore, there are two possibilities. The first thing is we can just change the origin and move it up front. एक काम हम ये कर सकते हैं. दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम इस मसल के अंदर से एक छोटा सा पीस निकाल लें. If this is the muscle, what we do is we cut it in half. इसको हम हाफ में कट कर लेते हैं. ठीक है,
दूसरी तरफ से इसकी इंसर्शन को लगे रहने देते हैं, इंसर्शन को लगे दरमियान से एक छोटा सा पीस निकाल देंगे, जब दरमियान से छोटा सा पीस निकालेंगे और इन दो एंड्स को आपस में स्टिच कर देंगे, तो बेसिकली ऑरिजिन और इंसर्शन तो सेम रहेंगे, हाउएवर द मसल विल शॉर्टन, मसल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, एंड दैट शॉर्टनिंग ऑफ द मसल इज कॉल्ड अ रीसेक्शन। तो रीसेक्शन बेसिकली ये है कि मसल शॉर्टन हो जाएगा लेकिन ओरिजिन इंसर्शन वही रहेगी। अब आपको समझ आ रही है कि अब मसल शॉर्टन हो गया तो इट कैन नॉट रीच दैट पॉइंट, व्हाट विल हैपन, दिस आई विल हैव टू मूव एंड विल हैव टू मेक अ कॉम्पनसेटरी मूवमेंट। तो कॉम्पनसेटरी मूवमेंट जब ये आई करेगी दूसरी तरफ इट्स नॉट फॉर सम रीजन, चलो कॉम्पनसेटरी मूवमेंट आपको अंडरस्टैंड है कि द कॉर्निया विल मूव लेफ्ट और फिर ही जाके वो मसल प्रॉपर्ली लग सकता है। These are the principles, the basic principles which tell us what a resection is and what a recession is. This muscle is not reach नहीं कर पा रहा, it will have to move so that this shortened muscle is now attached. These are the concepts. बीच में गैप रह जाते हैं उसको कैसे फिल करते हैं? गैप मसल्स एंड्स को आपस में स्ट्रेच कर देते हैं, मतलब तो origin insertion को हमने नहीं छेड़ा था ना? नहीं छेड़ा था ना हमने, तो origin insertion हो रही है, for example this is the origin, this is the insertion, this is the muscle. Okay, what we do is थोड़ा सा insertion से पहले we cut the muscle. इसको मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से कहता हूँ, so we cut the muscle over here. We take a part of this muscle and now we try to stitch these two ends together. अब आपको पता है कि if the distance it remains the same, तो ये दोनों आपस में stitch नहीं हो सकते. It's not possible. What will have to happen that this insertion will have to move closer. ये insertion को करीब आना पड़ेगा ताकि stitching इनकी possible हो जाए। Insertion करीब कैसे आएगी? जब eyeball rotate कर जाएगी उस तरफ, जब eyeball move करेगी, तो eyeball will have to get closer. It will have to move closer. This is the principle of resection. अभी आपको बेहतर समझ आई है? Yes, समझ आ रहा है। आगे गए, चलो. That's good. So in our case, our patient has left esotropia. What are the two surgeries which you would want to do in this patient, which can be done in this patient theoretically? Very बात है कि if it's the left eye, so both the surgical procedures will be on the left. Okay, and it's a horizontal deviation. ESO है ना, तो मतलब अंदर की तरफ it's horizontal. So you will be मतलब you will be performing a surgical procedure on either the lateral rectus or the medial rectus. वही दो muscles काम कर रहे हैं ना horizontal level पे, बाकी तो कोई नहीं काम कर रहा. So what would you want to do with the horizontal rectus? Medial rectus, and what would you want to do with the lateral rectus? Medial rectus की recession कर देंगे, lateral की section कर देंगे. ठीक है, so it's an esotropia, meaning that the movement is inwards. तो आपने outwards move कराना है को. In order to move the eye outwards, you need to strengthen the lateral rectus and weaken the medial rectus. The lateral rectus को strengthen करने के लिए you will do a left LR resection. In order to weaken the medial rectus, you can perform a left MR medial rectus recession. आप उसकी और insertion को पीछे ले जाएं, थोड़ा ढीला कर दें. These are the two surgeries which you would like to perform. इसके अलावा भी काफ़ी सर्जरीज आपकी बुक्स में दी हुई होंगी. एक मार्जिनल मायोटमी है और इस तरह की 2-3 चीज़ें. However, they're not performed, but do remember those, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में आपसे SQ से पूछ लेते होते हैं कि write 2 types of strengthening procedures, write 2 types of weakening procedures. So resection is one type of strengthening procedure, recession is one type of weakening procedure. एक टाइप आप खुद पढ़ लेना, because I'm not sure, मुझे इस वक्त भूल गई हैं और मुझे खुद नहीं आती होती है. So this was the treatment. Okay, this was our case of esotropia. We saw how we will manage. Management हमने कैसे करनी है. We saw the investigations which we would like to do, and we saw what are the surgeries which we can do. इसमें से important part ये है कि remember these tests. What are they used for? Because in our prof this time we had an MCQ. Basically non-committed esotropia में से था, and it was about an investigation which is used to check diplopia.
So when I heard diplopia, so I thought synaptophore होगा. And synaptophore I think is used, but that wasn't given in the options. The 3-4 थी, उसमें Rizembar cover test भी था, Kremski's corneal reflex भी था, बाकी 3 और थी. So because I knew that Rizembar cover test is used to assess deviation squint, a square deviation in esotropia, and I knew that Kremski's corneal reflex is used also for the same reason, so I was able to eliminate 2 options. I was down to 3 then. So that is why you have to remember. इसी तरह आपसे कोई पूछे तो synaptophore का function क्या है? Binocular vision है. ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि which of the following is used to assess binocular vision, then you will know that Hirschberg is not used, Rizembar is not used, Kremski's corneal reflex is not used, synaptophore is used. Okay? It helps a lot if you know what function is. आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा for MCQs. So this was esotropia. We finished tropias for now. I believe. I think if you still want to do tropias, अगर exotropia का भी case करना है तो कर लेंगे कल. But I'm in the favor कि हम फोरिया start कर दें because it's more or less the same और उसी तरह ही इसकी management है, उसी तरह ही इसकी treatment है. So now we have forias. Forias क्या थे? What are forias? That is my first question. And how will they show up on a Hirschberg's test? First question, what are forias? Latent squint. Latent squint, right? Forias are latent squint, and latent squint means that there is no obvious deviation on Hirschberg's test. When there's no obvious deviation on a Hirschberg's test, we will have to चलो इसको मैं let it put me it another way. If there's no obvious deviation on Hirschberg's test, it means that on there is fusion, there is binocular vision, and that fusion is preventing the deviation. Okay, there is a tendency. Latent squint की definition है ये ना कि there is a tendency of the visual axis to deviate. However, that tendency is corrected or that tendency is kept in check by the power of fusion. Fusion है उसकी वजह से वो tendency check में है. So how will we break fusion? It's simple कि cover करके. It's simple that we want to break fusion. कि अगर fusion break करें और फिर भी deviation ना हो, तो we will know that there is no squint. So first thing is we have to break fusion, and then we will perform. For that we will perform a cover test again. Because there is no obvious squint, we can cover up any eye. Okay, any eye. दो आंखें होती हैं तो either eye would be better. We can cover up either eye. There are still 2 possibilities now. What are the 2 possibilities? Will deviate or not? Okay, the other eye. Because when we've covered the normal eye, we can only see the other eye. We will see whether the other eye deviates or not. नहीं other eye का deviation होता है? हाँ yes. नहीं उसी eye का. उसी eye का होता है ना. लेकिन चलो अभी तो possibilities 2 ही हैं. कि other eye takes a fixation. एक possibility है ये ना because we are seeing only one eye. एक eye तो हमें कभी कभी दूसरी में नजर आ रही है. अगर eye takes a fixation or in simple words the other eye it moves. एक possibility ये है कि that eye moves. This is one possibility, and the other possibility is that this eye does not move, and other eye does not move. Crowded हो गया चलो कोई. Other eye does not move. This is the second possibility. If the other eye moves और आपको लग रहा है कि उसने fixation tape up कर लिया, then what will you think is happening? आपको तब क्या लगेगा कि हाँ रहा है? I'm talking about this scenario. जिसने अभी फिक्सेशन दिया वो इसमें यानी कि प्रॉब्लम थी. तो देखो हमने जब बात की थी फोरियास की तो
हमें जब कवर की बात की थी कि कवर करेंगे और दूसरी आई मूव करेगी, इट टेल्स अस दैट आई इज टेकिंग अप, मूविंग अप, मूव कर रही है, इट्स टेकिंग अ फिक्सेशन नाउ। और अगर वो कवर नॉर्मल है कि कवर करने के बाद मूव कर रही है, उसका मतलब है कि पहले भी डिविएशन थी, हमें हर्शबर्ग्स पे नजर नहीं आई। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको इस बात की समझ आई है? द पॉइंट व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन नाउ, इफ देयर इज, अगर हमें कोई ऑब्वियस पॉइंट नहीं मिल रहा एंड वी कवर अप वन आई एंड द अदर आई व्हिच शुड नॉट मूव, ये ऑब्वियस पॉइंट तो नहीं है ना, एंड इट मूव्स टू टेक अ फिक्सेशन, उसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग which we did not pick up on Hirschberg's test, which we could not pick up on Hirschberg's test. Okay? Let me repeat ठीक है. this. Let me repeat this because one student does not understand at the moment. Let me go back to the eyes. Okay? If there is no obvious deviation, there is no obvious deviation at this moment in these eyes, and you cover up either eye, आपको लगता है चलो दोनों ठीक है, मैं कोई एक cover कर लेता हूँ, you cover up the right eye, but the left eye it shows a motion. It shows a motion, थोड़ा सा subtle motion है, but it still shows motion and you're able to see that motion. It will tell you कि all right, पहले भी कोई गड़बड़ थी which you were not able to pick up on screen. क्योंकि जब आप इसको remove करेंगे तो ये वापस चली जाएगी और ये शायद उधर की उधर ही रहे. It tells you that there was something wrong from the start which we were not able to pick on Hirschberg's test. आपके हर्शबर्ग शो कर रहा था कि ऑब्वियस स्क्विंट नहीं है, लेकिन इसको तो स्क्विंट है, क्योंकि जो हमने नॉर्मल आई या एक आई को कवर कर दिया और दूसरी आंख ने मूव कर दिया. ठीक है, दिस हैपेंस अ लॉट बिकॉज नाउ यू कैन सी, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इफ देयर वाज हर्शबर्ग्स टेस्ट it would appear to be centralized. If you put a cover in front of the eye, it will just slightly move outwards. Now it's centered. If you remove the cover again, it will move just a little bit towards the left. There's a very small squint. This is what they call a micropropia. तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं. Is either a microtropia. Microtropia is a very small squint. I think 5 या 10 diopters होते हैं, prism diopters. बहुत छोटा squint होता है, लेकिन it's obvious कि आंख move कर रही है. वो आप कभी-कभी हर्शबर्ग से पिक नहीं कर पाते. So either it's a microtropia या फिर इस पेशेंट को intermittent squint है जो अभी manifest हुआ है properly. कभी-कभी manifest नहीं होता. तो इसको हम कल दोबारा एक बार देखेंगे. Don't worry about it. Coming purely from a point of heterophorias को discuss करें, तो when we cover up another eye, other eye should not move. ठीक है, because fusion की वजह से वो capacity है, मतलब fusion है, binocular vision है, there is no deviation of the visual axis. Now when you break the the fusion, there is a tendency of the visual axis to deviate. लेकिन जो आंख fix कर रही है वो तो deviate नहीं करेगी. Coming back to these doodles, both the eyes are fixating normally at the point. ठीक है, both ही आंखें एक ही जगह को देख रही हैं. If you cover up one eye, and if this eye is looking straight ahead and it's fixating, do you think this eye will move? It shouldn't move because it already is fixating on the point of object. Binocular vision है, इसी वजह से fixation कर रही है. So which eye should move? जो कवर है, जो कवर हुई भी है. ठीक है, so what we will do next, the other eye does not move, we will remove the cover and now we will check whether there is a recovery movement. अगर recovery movement है या नहीं है, there are two possibilities, right? There are two possibilities. One is there is no recovery movement. Other is yes, there is a recovery movement. Recovery movement क्या होती है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं. Then I will ask you कि दोनों conditions में क्या आपको लगता है. ठीक है, so let's just say that you have covered this eye, right? ये आंख तो पहले भी फिक्स कर रही थी, अभी भी फिक्स रहेगी, but fixation
is broken and fusion is broken and the eye behind the cover is not able to fixate. अभी अगर उस आंख में कोई टेंडेंसी होती है डिविएट करने की, तो now is the time the right eye will deviate, but we're not able to see the direction in which it has deviated. हमें तो नहीं पता लग रहा ना, because there's a cover present in front of the eye, which is हमें भी नजर नहीं आ रहा. What we will do, we will remove the cover. If on removing the cover, the eye is still straight and it's still looking onwards, कोई recovery movement नहीं है, then what do you think is the case? बिल्कुल सही है, कोई squint नॉर्मल है. बिल्कुल सही है, normal है. There is no squint. ठीक है, there is no squint. However, if we when we were to remove a cover और हम देख रहे हैं कि आंख फौरन अंदर की तरफ आई है, मतलब हम जब कवर रिमूव करते हैं, we saying that the eye it comes centerward. तो रिकवरी मूवमेंट किस तरफ है इस पेशेंट में, इस केस में? When we remove the cover and we see that the eye it quickly moves from this position to this position, and the recovery movement is towards which direction? Medially. देखिए medial side पे. So if it is recovering towards the medial side, उसका मतलब ये है कि अब फिक्सेशन लेने के लिए इसको medially move करना पड़ रहा है, तो कवर के पीछे ये laterally deviated थी. Laterally deviated थी ना, जिसकी वजह से अभी medially move कर रही है. This tells us कि all right, this patient had a latent squint and the eye was deviated outwards because we saw that the recovery motion was inwards. This squint, this patient in our case has a latent because it's not manifest, exo because there's an outward deviation for which there was an inward recovery movement, and it's a phoria. So it's a latent squint or an exophoria. ठीक है, this is why it's important that we pay focus. कवर एंड कवर टेस्ट पे आपको कुछ समझ आई है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन लेटेंट एंड मैनिफेस्ट. जब मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है, we will have to see the recovery movement of the other eye. अदर आई मूव करेगी. फोरियाज में जिस आंख की आप फ्यूजन ब्रेक करेंगे, जिस आंख का विजन आप ब्लॉक करेंगे, वो डिविएट होगी, उसके चांसेस हैं डिविएट होने के. सिमिलरली, लेट मी present you another hypothetical case, right? This is a patient and on examination he does not have an obvious squint. I cover his left eye, his right eye does not move. However, when I uncover his left eye, what happens? I see that there's a recovery movement from the right, this patient's right, to patient's left. So the recovery movement is actually towards the lateral side. What does this patient have? He has an esophoria because the squint, there was a tendency for the eye to deviate inwards. Undercover it deviated inwards, and as soon as I uncovered, it moved outwards so that it could again pick up fixation. This is how on cover and cover test you will diagnose a patient who has a phoria. So I'm going to stop now. I will leave it at here. इसको देखना चाहते हैं इस algorithm को? That's good. Otherwise, I'll send pictures from Parsons. They're very good, I believe. मुझे उनसे काफी help मिली है, and I always remember those. क्योंकि वो examinations में, vivas में, what tests में, it helps a lot. So I'll send over screenshots of those pages. Other than those, does anyone have any questions? Because we're finished for this session now. Stop.